Good morning. I hope so ठीक अछि. So let us start this Sunday morning with this thought, right? पिला माने आज गोटे नुवा स्टाइल स्टार्ट करिया. I hope screen रे जहा लिखा है पढ़ी पारछंदी. आज जहा ऊपर दुनिया हसे सेही माने इतिहास तैयारी करछंदी. I thought आज का दिन रो स्टार्ट हम एमिति ही करबा के बहुत थोर एमिति हुए पिला माने. As a teacher, I believe कि दुनिया जदि सबुठु कष्ट जिंस किछि अछि इट्स बिकमिंग अ टीचर, राइट? जेतळ आपण पिला को गाइड करंती सेतळ आपण को हाथ रे गोटे पिलार फ्यूचर थाए, गोटे भविष्य थाए. सो मु भाबे एटा पर्सनली फील करे जे टीचर हवा बहुत कष्ट, कारण कि आपण को सामने रे जेतळ गोटे स्टूडेंट आसी कि कांदे कि मु सर पाठ तो बुझी पारछे किंतु ता परे हाउ टू मैनेज डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ एटा जानि पारुनी, राइट? मोर सब जिंस ठीक अछि किंतु कोठी ना कोठी डर लागुची, कोठी ना कोठी गोटे एंजाइटी रहउची. तो एई सब जिंस उडा लाइफ देई कि लोक माने गति करते स्टूडेंट्स माने स्पेशली. तो ए स्टेज रे टीचर रोल भारी इंपोर्टेंट. टीचर को प्रॉपर्ली गाइड करिया को पड़े जे पिला माने एईटा करो एटा करो नाही, पाइला भलिया काम करो, पाइला भलिया न पाइला भलिया काम करो नाही, राइट? निज ऊपर भरोसा रखो. दिस फेथ इज वेरी इंपोर्टेंट. निज ऊपर जदी भरोसा अछि ताले आपण माने करि परिबे. अना आम भितरे ही बहुत गुडे स्टूडेंट्स अछंती जो माने वर्षे 2 वर्ष 3 वर्षर प्रिपरेशन रखिछंती तथापि से माने एग्जाम क्वालिफाई करि पार ना हंदी. कारण कोन? कारण बहुत इजी एंड बहुत क्लियर कोन ना दे डू नॉट फॉलो द राइट प्रोसेस. मु जत्ता बेले भी क्लासरूम रे किछि पढ़ाइबा स्टार्ट करे ता पूर्व ए जिंस ऊपर बहुत फोकस करे जे पिला माने प्रोसेस टा ठीक रखो. कारण कि जीके पही जदी मु कहि बही बहुत अछि. You have many sources, right? The world is nowadays आपण माने जो जुगरे अछंती से जुगरे बहुत गुडे सोर्सेस अछि इंफॉर्मेशन रो, राइट? किंतु पिला माने जहा पाखरे प्रोसेस ठीक अछि, जे ठीक प्रोसेस फॉलो करछि सी ही अल्टीमेटली एग्जाम क्वालिफाई करछि. ऑलराइट, स्टिल आपण माने जदी देखंतु गोटे एग्जाम अछि एएसओ एग्जाम पछरे जदी लागि चंती ताले ये आपण को आ किछ एक्स्ट्रा समय देछि. ए समयटा को नष्ट करिबानी. ओके, एवरी डे you try to learn something. सब दिन गोटे नुवा दिन और सब दिन किछि किछि सिखिबा को चेष्टा करिवे. जदि एई प्रोसेस टा फॉलो करूचंदी ना ताले देखिबे आपण रिजल्ट दिने ना दिने डेफिनेटली पाइबे, राइट? आज का डेट रे किए आपण को क्रिटिसाइज करूची, किए आपण को निंदा करूची, ता ऊपर आपण फोकस करंतुनी. ऑलराइट, निज ऊपर भरोसा रखंतु आ निज कामटा को कंटीन्यूअसली करि चलंतु. दिस विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट. ओके, जे कोनसी एग्जाम रे आपण बसंतु, राइट? प्रति वीक रे मु गोटे वीक रो करंट अफेयर्स नै कि आसुची, राइट? आ प्रथम स्टेटमेंट भी एया ही कहूची जे दिस इज नॉट अ कंप्लीट मटेरियल, आई टेल यू, राइट? गोटे वीक रो मु खाली जिस्ट नै कि आसुची. आपण को काम वीक रो बिगिनिंग रु कोन करिवे. सपोज दिस वाज द 1st of March. 1st of March रो करंट अफेयर्स पढिली, 2nd March रो करंट अफेयर्स पढिली, 3rd March रो करंट अफेयर्स पढिली, 4th March रो करंट अफेयर्स पढिली, राइट? देन एमिति करी करी 7टा जाको दिन रो करंट अफेयर्स पढिली. ता परे जते बेले वीक रो एंड रे मु करंट अफेयर्स रो एनालिसिस करूची. आपण खाली ना टिक करी करी चलीबे जे ए इश्यूटा जोटा मु इना डिस्कस करूची एटा मु पढिची ना नै. ओके, सो एमिति करी करी कोन करिवे ना देखि देखि जिवे. जदी कोनोसी इश्यू मिस हे गला सेटा को नोट करी चलीबे, right? This is the way how to know as much information as possible. In order to retain this information, I'm just trying to explain all these things. All right, chalantu. So with these thoughts, let's start the discussion today. I can see there are some students who are listening to me. Okay, so let's start the discussion. Let's see the first question. What is the theme of the National Science Day 2022? Okay, as I have already told you, बारंबार भी कहि आसी जे पिला माने जेते बेले आपण क्वेश्चंस गुडा को देखु चंती ना ताले आजि आमे अछंती 2022 मसिया रे, करेक्ट? आमे जदी एटू ठीक 10 वर्ष पछ को जिबा 2012 को जिबा, करेक्ट? से समय रे क्वेश्चन रो स्टाइल कोन थिला. जदी इंपोर्टेंट डेज से माने पचारुथिले से माने सिंपली पचारुथिले नेशनल साइंस डे टा केबे. This was the type of question in 2012. माने आज टू पाखा पाखी 8 वर्ष 10 वर्ष पूर्व. आज का डेट रो डिमांड कोन से माने आपण देखंतु डे कहि दउछन सीधा. देखंतु नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड ऑन 28th of February. बट व्हाट वाज द थीम? पिला माने बारंबार कहूची थीम ऊपर फोकस रखि दिबे.
राइट एबे से माने कोन पचाउछंती गोटे स्टेप आगो को जाई कि थीम पचाउछंती यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि मु थीम जानि छिना नै राइट फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन सपोज रिसेंटली मार्च 8 दिन मार्च 8 कोन थिला विमेंस डे थिला राइट इफ इट वाज विमेंस डे ताहले हमें विमेंस डे रो थीम एथर को जानिले की करेक्ट इट वाज 11th of March 11th of March दिन कोन देखले हमें गोटे दिन थिला ओडिया लैंग्वेज डे से दिन ओडिया लैंग्वेज को गोटे क्लासिकल लैंग्वेज रो स्टेटस मिलिला तो सेटा हमें जानिले की ओके सो जते बेले मो एई जिंस मु आपन कहि देछि ऑलरेडी जे करंट अफेयर्स को केमिति कल्चर करिवा क्लासरूम से ऑलरेडी एक्सप्लेन करिछि हाउ टू रीड ए न्यूज़पेपर ओके दैट आई हैव ऑलरेडी ताकि 10टा पॉइंट आपन को डाकिछि जे पेपर कोन कोन एग्जैक्टली पढिबा सेथरु इंपोर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स कहितली राइट सो हियर इट इज द क्वेश्चन यू सी व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2022 it was integrated approach in science and technology for sustainable future correct and this was observed on 28th February every year right why on whose birthday it is celebrated it was Indian physicist CV Raman the important discovery in the field of spectroscopy Raman effect discover kale the theme of national science day was such and such okay 1928 मसिया रे Raman CV Raman who discovered this Raman effect सेति पई एटा न्यूज रे बिथरा राइट yes मु पचारली women's day रो थीम कोन थिला सत्यव्रता has rightly said it gender equality for sustainable tomorrow that was the theme of women's day correct okay आउ गोटे दिन सब पिला नोटिस करिवे हां आउ as it is an open platform so I don't hesitate to tell all these things कोन ना जते बेले आपण एते लंबा चौड़ा गोटे थीम देखु चंती ना सो गोटे काम करिवे पचारंतु भी पिला माने मते केमिति एगुडा मन रखिबा राइट एते लंबा चौड़ा थीम मने केमिति रखिबा you just search the keywords for an example suppose you see this was the theme of national science day एतर keywords कोन either you can say ए भितर कोन गोटे टर्म आपण सर्च करिवे देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आज सच अछि तो याको आपण कीवर्ड नहीं परिबेनी कोन पय कारण कि सब थीम रे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी थिबो यू सी द ऑप्शंस ए ऑप्शन ए रे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अछि ऑप्शन बी रे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अछि बट दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ रिलायबल कीवर्ड ओके एठी कोन करि परिबा गोटे टर्म देखंतु इंटीग्रेटेड अप्रोच यस दिस मे बी ए कीवर्ड सस्टेनेबल फ्यूचर दिस मे बी ए कीवर्ड ऑलराइट सो प्रति लंबा चौड़ा थीम रे आपण ट्राई करिवे कोन yes Arpita madam is saying March 10 is kidney day yes the theme was kidney health for all that's correct Arpita that's correct okay so I am talking about keywords if you come across such certain long themes then you just try to search what are the keywords निजो इच्छा हिसाब रे गोटे कीवर्ड को आपण पिक करिवे आ ताको मन रखिया चेष्टा करिवे जदि लंबा चौड़ा स्टेटमेंट मन रहू नाही right this is one number 2 what does S stands for in Swift I hope most of you know it ओके कि स्विफ्ट रिसेंटली न्यूज रे थिला स्विफ्ट मेकानिज्म रो कोन करा जायछि ना रशिया को बाहर कर दिया जायछि राइट सो somebody is saying voice आसुनी राइट पिला माने टिके मते क्लियर करंतु whether I am audible clearly or not पिला माने am I audible clearly right so talking about this Swift was in news recently Swift stands for what Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication okay जो handout recently मु आपन को देइछि current affairs रो सेथरे भी Swift को explain करिछि right so there is no you know urgency कि suppose आपन कहि परिबे no necessity of panicking all right अपन करिवे कोन ना एकरा को क्लियरली टिके बुझियो के चेष्टा करंतो बट इज स्विफ्ट एक्चुअली सपोज ए पर्सन इज विलिंग टू सेंड मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री सपोज गोटे भारत रे गोटे लोक अछि से कोठी पठेबो पैसा ना यूके को पैसा पठेबो सपोज ता पोस्ट रे पढुची तो पैसा पठेला बेले से कोन करबो एटा दीटा देश मोटा कहि छिबी जता बेले हमें निज देश भीतर पैसा ट्रांसफर करू जंती वी यूज टू प्लेटफॉर्म्स गोटे हला एनईएफटी बल्क मनी कथा बुझे हां एनईएफटी आ आरटीजीएस correct NEFT or RTGS अच्छा break होची voice correct I'm just trying to rectify it how तो कथा होची suppose India भितरे हमें पैसा पेमेंट करछन ना so we actually used to
systems गोटे हला NEFT that stands for National Electronic Funds Transfer आ गोटे हला RTGS Real Time Gross Settlement त माने एथिरे देश भितरे आपण पैसा रो एक्सचेंज करूछंती गोटे जगह रो अन्य जगह को पठाउछंती किंतु जतबेले देश बाहर को पठाउछंती सेतबेले किछरा अलगा सिस्टम्स यूज करिया को पड़ुची से भितरु स्विफ्ट आजिका डेट रे सबटु रिलायबल एथिरे कोन होय जतबेले आपण एठू भारत रो अलगा देश को की अन्य देश रो भारत को पैसा आसुची सेतबेले कोन होची ना ए देश रो से देश को पैसा पठेला बेले 8 डिजिट रो गोटे स्विफ्ट कोड पठेबा को पड़े राइट फ्रॉम वन बैंक टू द अदर बैंक से बैंक कोन करबो पुनी सेटा को कंफर्म करबो जे यस दिस इज ए सिक्योर ट्रांजैक्शन ताले एथिरे कोन करा जिवो ना माने इमीडिएटली पैसा कोन जिवो ना ट्रांसफर जिवो राइट सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ए स्विफ्ट एक्चुअली इश्यू कोन पय थिला ना रशिया को रिसेंटली कोन कर दिया गला ना एथु बाहर कर दिया जे ओके कि रशिया रो इकोनॉमी माने ताले तार इंपैक्ट ता कोन पड़िबो ना रशिया रु कोनोसी लोक पेमेंट बाहर को पठै परिबनी कि बाहर कोनोसी प्रकार पेमेंट देश को आसी परिबनी इन सिंपल वर्ड्स जो ट्रेड अछि ना ट्रेड जा को में एक्सपोर्ट कहउचंती कि इंपोर्ट कहउचंती एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुडा बहुत बड़ मात्रा रे कोन होबो ना इट विल बी अफेक्टेड ओके स्विफ्ट न्यूज रे थिला नेक्स्ट the term is Millennium Challenge Corporation is an initiative by which country? Millennium Challenge Corporation. This is an initiative by USA. What is this Millennium Challenge Corporation? It was created by United States in 2004. Right. Recently, Nepal's parliament has approved $500 million in of grant. In spite of several street protests and opposition in the country, Nepal signed the US government's MCC pact to fund infrastructure project. तामाने कथा होची US कोन करची $500 million रो ग्रांट देइचे काकू ना नेपाल को आ ए ग्रांट को नै कि नेपाल रे लोक मान रागी के अछन but its ratification was not made due to divisions within political कथा होची यार गोटे सिग्निफिकेंस कोन रहउची ना बड़ बड़ कंट्रीज माने एई भले छोट छोट कंट्री जेमते कि गोटे हला नेपाल गोटे हला पाकिस्तान गोटे हला सी भूटान इज अनदर कंट्री श्रीलंका इज अनदर कंट्री मालदीव्स इज अ कंट्री ए छोट छोट कंट्रीज माने को कोन करंती छोट इन द सेंस इकोनॉमी से मानकर बहुत पुअर ए कंट्रीज माने को से माने आगे लोन दियंती राइट तापर कोन करंती ना जतबेले सेही कंट्रीज माने एक तो गरीब सेतबे लोन फेरी परिबेनी एज ए रिजल्ट कोन होबो ना सेही कंट्रीज माने ए देश रे निजरो जो इन्फ्लुएंस ता बढ़ी बढ़ी चलती जेमते कि श्रीलंका सहित हो जाईची राइट आई होप सेही सेम इश्यू पई नेपाल रो लोक माने रागी हिचंती जे तमे बाहर काहे कि पैसा आनु करेक्ट सो मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन वाज इट इज वन ऑफ द एंटिटीज रिलेटेड टू यूएस ओके now what is the revised compensation to the kin of hit run victims in case of death right issue टा कोन पचारुची ना माने रास्ता रे जो दुर्घटना गुडा होची रोड एक्सीडेंट्स करिका ताले तांकर जो प्रियजन होचंती तांकू केते टंकार कंपेंसेशन मिलिबो इन केस ऑफ डेथ ताले एटा केते ना 2 लाख टंकार कंपेंसेशन मिलुची करेक्ट सो दिस इज अनदर क्वेश्चन रखिबे ओके ए साइड रो होमवर्क नियंतु हु आर दिस दे आर कॉल्ड जमन सब रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स मान को सहायता करंती हां से मान को कोन कहआ जाय राइट पीपल हु हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स तामाने सेही लोक मान को कोन कहआ जाउची गवर्नमेंट आज का डेट रे तांको सर्टिफाई करूची माने सर्टिफिकेट्स दोची जो मन सब रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स मान को सहायता करूची and I must tell you the answer okay se mane ko कहआ जाउची गुड समरिटन they are called good samaritan eta uti note करनेबे good samaritan right those people who help the road accident victims se mane को good samaritan ta माने हॉस्पिटल नेकी पहुंचीबा ताही सबड बड़ चैलेंज थाई जदि से लोकटा टाइमली हॉस्पिटल पहुंची जीवो ताले से पहुंची जीवो ओके नेक्स्ट which is the headquarter of International Atomic Energy Agency पिला माने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपन कर एएसओ करिकार पडुची सेति भाई याकू भलो से नोट करिवे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA करेक्ट सब एठी पचारु जे कोन IAEA रो हेडक्वार्टर कोठी अछि ऑलराइट तारे यार हेडक्वार्टर कोठी अछि ना वियना रे अछि ऑस्ट्रिया वियना
करेक्ट तो आपण को काम होची IAEA रो ए पांचटा डायमेंशन को खोजिबे राइट नंबर 1 असला फुल फॉर्म दैट मींस if you come across certain institutions like this ताले तार पांचटा जिंस जणा थिबा दरकार कोन कोन गोटे हला फुल फॉर्म नंबर 2 आसिला कोन ना ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नंबर 3 आसिला कोन ना हेडक्वार्टर नंबर 4 रे हेड की अछंती प्रेजेंट हेड आउ नंबर 5 रे मेंबर्स केत्रा अछंती तमाने ए पांचटा एंगल रु कोनोसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जानिथिबा दरकार गोटे पिल जोटा पढिबो करिवे ना माधवी पुरी बुच has been appointed as the president or the first woman president or chairperson of which regulatory body SEBI right it is a highly probable question या कोई important mark करिवे very important question पढला भलिया question ये correct so madhavi puri buch has been appointed as the first woman chairperson of SEBI recently okay and I hope you know what is SEBI रो full form कोन right again this is an organization ताले यारो भी same full form year of establishment वगैरह वगैरह सब खोजिबे alright she is the first lady to become the head of such kind of a regulatory body remember सेति पय इटा important आउ SEBI recently news रे भी थिला she replaces अजय त्यागी तो एटा भी मन रखतिबे ठीके आगरु या पूर्वरु जस्ट किए थिले अजय त्यागी करेक्ट आउ कोन ना SEBI कहा सहित एसोसिएटेड की न्यूज रे थिला ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सहित सो SEBI भी खोजिबे आउ एट द सेम टाइम NSE भी थरे सर्च करि देबे ओके नेक्स्ट वन As per second advanced estimates of national income, what is the real GDP growth of India? पहले माने जो सेशंस गरिकार मु एबे GDP पढी सारी छी आई होप तांको ए क्वेश्चन ता एबे इजी लागिबो तो से पचारु कोन रियल GDP कथा पचारु ऑलराइट सो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट GDP हमें कोन डिस्कस करले GDP रो दुटा डायमेंशंस कहितली गोटे हैला नॉमिनल GDP आ गोटे कहितली रियल GDP ऑलराइट रियल GDP is calculated at the base year prices whereas nominal GDP is calculated at the current prices रे हमें nominal GDP हिसाब करूछंती आ रियल GDP base year रो prices रे हिसाब होची करेक्ट तो मन पकांतु ठीक है आउ याको आउ थरे रिवाइज करिया को चेष्टा करंतु ताले क्वेश्चन कोन पछा as per the second advanced estimates of national income India, what is the real GDP growth of India in 21-22? जोटा already हे जाई it is 8.9%. Okay, एक तो देखो एक क्वेश्चन रो दीटा एंगल अछि गोटे एंगल कहूची बेसिक्स कोन कहूची ना what is GDP, what are the dimensions of GDP, right? Another angle is the current angle कोन कहूची ए वर्ष रो रियल GDP रो एस्टिमेट्स ता के करेक्ट so please understand both the dimensions of जत्ते बेले भी एमितिया क्वेश्चन डील करिवे see this is a question related to economy है ना आ मो ए जिंस आपन को भरोसा भी दिया करी छि पिला माने कि इकोनॉमी जहार बैकग्राउंड भी नाही साइंस बैकग्राउंड वाला पिला से मानको डरिबार कोनोसी आवश्यकता नाही एमते भाबी कि डरि जिबेनी जे इकोनॉमिक्स तो पढिनु केबे हबनी करेक्ट जदी मनुष्य भलिया पढी पारिबे जदी मनुष्य भलिया गाइडेंस पाइबे डेफिनेटली इकोनॉमिक्स रो बढ़िया करिबे Alright, and I tell you this thing again कि इकोनॉमिक्स रो ही क्वेश्चन पिला माने सब अधिका छाडंती है ना मुंडो रे ही पसेनी करेक्ट चलो so the Yilan crater that was in news is the largest impact crater on earth has been discovered in which country recently एक तो क्रेटर रो माने बुझंतु पिला माने राइट क्रेटर इज बेसिकली व्हाट क्रेटर होची गोटे प्रकार डिप्रेशन राइट सरफेस ऑफ अर्थ रे नॉर्मली कोन होय जेतेबेले अर्थक्वेक हुए ना अर्थक्वेक कोन करे ना लैंडफॉर्म टाको डिस्टेबलाइज कर दिए करेक्ट ता माने से कोन करबो ना एक प्रकार रो स्ट्रक्चर उडा क्रिएट कर व्हिच आर एक्चुअली एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स किंतु जेतेबेले इमेजिन करंतु वोल्केनिक इरप्शन हुए सेतेबेले किछि वर्ष परे कोन हुए वोल्केनो जदी इरप्ट हबा बंद कर दिए ताले से जो माउथ को ना याकू बेसिकली गोटे क्रेटर कहउछन करेक्ट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स क्रेटर को दीटा एंगल रु डिस्कस करि परिबा गोटे क्रेटर जे वोल्केनिक एक्शन थ्रू रु तयारी हेतिबो गोटे बट एठी जो क्रेटर कथा से कहूची राइट इट इज टॉकिंग अबाउट ए इंपैक्ट क्रेटर अंडरस्टैंड इट इंपैक्ट क्रेटर कोन ना आम पृथ्वी बाहरु कोनोसी गोटे प्रकार रो मटेरियल आसिला जहा को हमें कोन कहउचंती ना बेसिकली वी कैन कॉल देम मेटेओराइट्स कहउचंती मेटेओराइट्स जो माने अर्थ रो एटमॉस्फेयर भितर पसी की अल्टीमेटली अर्थ रो सरफेस रे आसी के बाडे होचन
नॉर्मली कौन हुए अर्थ एटमॉस्फेयर पसिला बेले मेटेओराइट्स माने हेवी टेम्परेचर पई मेल्ट कर जांती सेठी पोडी की पाउस होई जांती अर्थ ऊपर शावर हुए कार माने ऐश करी कर पाउसर किंतु जदी से मेटेओर टा से हेवी टेम्परेचर को रेजिस्ट करी गला अर्थ रे आसी की बाडे हला से कोन तयारी करे गोटे इंपैक्ट क्रेटर तयारी करे करेक्ट एंड दैट इमेज वुड बी समथिंग लाइक दिस एमितिया दिसेस माने इमेजिन करंतु आपण गोटे लुहार बॉल धरिले कि लुहार पत्थर धरिले आ गोटे जगह रे प्लेन बाली अछि प्लेन बाली को जोर से मारिले पत्थरटा से पत्थरटा कोन कर पेस्ट की रही गला आ ताको जदी उठेबे से जगह रे गोटे गात हे जेथियो करेक्ट सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ए येलान क्रेटर जोटा रिसेंटली डिस्कवर हेची कोठी डिस्कवर हला ना चाइना रे तले अगेन देखो पिला माने ए सेम क्वेश्चन रो दीटा एंगल बुझिले गोटे हला बेसिक एंगल जोटा बुझेली व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रेटर्स गोटे हला वोल्केनिक क्रेटर और क्रेटर जोटा वोल्केनिक एक्टिविटी रु तयारी हे परथिबो आ गोटे हला कोन इंपैक्ट क्रेटर जोटा आउटसाइड हेवनली बॉडी के उडा आसी की पड़िथिबो से थ्रू रे अर्थ रे डिप्रेशन क्रिएट करेक्ट सो दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट ए क्रेटर टा कोठी डिस्कवर हेची राइट येलान क्रेटर चाइना राइट आ गोटे जिंस खाली कोन चाइना रे ही एमती जिंस अछि भारत रे नाही राइट सो एठी गोटे जिंस सर्च करिवे टेक इट एज अ होमवर्क व्हाट इज दिस लोनार लेक पिला माने लोनार लेक टा कोन सर्च करिवो दिस इज योर होमवर्क करेक्ट इट्स नॉट मैंडेटरी कि एठी आंसर दियो मते बट नोट इट डाउन राइट आ सर्च करिकि निजे को जणैबो जे लोनार लेक विषय रे मु जानि छी करेक्ट so what are the details it's a Christian shaped crater the Yelan crater it is named the Yelan crater holds the record as the largest impact crater on earth see this is the information that was formed 1 lakh years before and the only impact crater ever discovered in China was found in G1 right as per the statement NASA Earth Observatory agency discover करछि Yelan crater measures about 1.85 kilometers across and likely formed 46,000 to 53,000 years ago alright based on radiocarbon dating एटी गोटे जिंस यार जो जहा को हम डायमीटर कहउचंती केते ना 1.85 kilometers correct 1.85 kilometers is also quite a big area next the Indian Navy conducted operational demonstration at which city एटा कोठी कला ना विशाखापट्टनम रे करथिबा पिला माने एठी गोटे त लॉजिक हम एया लगे परिबा जदी नेवी कोनोसी प्रकार रे एक्सरसाइज करूची या कोनोसी सिटी विषय रे पचारिची ताले पिला माने सिटीटा कोस्टल रीजन रे हेतिबो ना नै यू टेल मी ए रीजन रे कोठी कोठी हेतिबो एंड दैट टू एमिति तो नहीं पूरी रे बेला भूमि रे आसी कर देबे नो it's impossible actually कारण कि पूरी इज अ सी बीच correct they want a coast actually right coast टा कोन coast टा होची एमितिया जगह right एठो पानी स्टार्ट हेति बीच टा केमितिया जगह बीच टा होची एमितिया जगह correct एटा this is a beach this is a coast तले coast केमितिया जगह हेतिबो जोठी माने पानी रो डेप्थ टा टिके अधिका थिबा दरकार है बीच रे पॉसिबल न सो इमेजिन करंतु भारत रे जितरा पोर्ट अछि कोलकाता रु नै की पारादीप हैला की धामरा हैला देन विशाखापट्टनम टुटीकोरिन चेन्नई और कोची और मार्मागांव देन another one is Mangalore और नवी मुंबई और JNPT मुंबई राइट कांडला हेबो ताले एठी कोठी होबो करेक्ट सो ए लॉजिक टा मन रखथिबे जदी भी कोनोसी नावल एक्सरसाइज होची ताले अल्टीमेटली से जगहटा गोटे कोस्टल रीजन हेतिबो मु एबे कहबी दिल्ली रे नावल एक्सरसाइज होबो हाउ इज इट पॉसिबल कोठी रहलानी दिल्ली जाई की इंडिया रो कैपिटल दिल्ली कोठी अछि समुद्र रो बहुत दूर रे अछि दिल्ली करेक्ट ई पाखरे कोठी दिल्ली अछि सो एठी नावल एक्सरसाइज होबो केमिति राइट सो ए लॉजिक टा एग्जाम रे टिके लगेबे सो next one the national level awareness program Sambhav is an initiative of which union ministry it's under ministry of MSME Sambhav correct I asked Lonar Lake ta koti achi Priyanka madam said it's in Maharashtra correct so madam yato out ଟିକେ extra ଜିନିଷ search କରନ୍ତୁ Lonar ବିଷୟରେ okay ତାର ମାନେ ପାଣିର କ୍ୱାଲିଟି कोन okay ଆଉ is there any biological activity which is conducted in those lake regions okay ठीक है तारो इकोलॉजी साइड टा को भलसे बुझंतु
Next, this national level awareness sambhav ita kiye initiate kala na Ministry of MSME, right? Micro, small and medium enterprises conduct karchi, right? Celebrating the iconic week of under Azadi Ka Amrit Mahotsav. So it was this question. What is the new motto of National Commission for Protection of Child Rights? NCPCR ର ନୂଆ ମୋଟୋ କଣ? Right? ଏଟା ନ୍ୟୁଜ ରେ କଣ ପାଇଁ ଥିଲା? ଟିକେ এই ଇମେଜ କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇମେଜ ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? The Women and Child Development Minister Smriti Irani, she declared a new motto for NCPCR. एटा कौन ना भविष्यो रक्षति रक्षितः. This is the new motto of NCPCR. Correct? This agency is very important agency. अन्यथा तो याको homework हिसाब लेखंतु. What is this NCPCR? National Commission for Protection of Child Rights. यारो details खोजिबे. Next. The new motto is Bhavishyo Rakshati Rakshitah. The minister also complimented the collaboration between NCPCR and BSF for the initiative called Sahara. So Sahara is an initiative between which two agencies? Gote hela NCPCR au gote hela BSF. Correct. This is another important question. BSF au NCPCR मझिरे जो initiative है ची ता ना हो जी कौन ना Sahara. Correct. A hidden question again. What is the name of India's first of the 4 stealth guided missiles destroyers under Project 15B? पिला माने जतबेले मु मिसाइल टेक्नोलॉजी पढौथिली ततले मने पकांतु ए जिंस कहितली what is the stealth guided missile, right? मु कहिची एटा बुझेइची बोलसे, right? एटी टर्म कोन आसला गोटेला stealth गोटेला guided गोटेला missile. Missile is a aerial flying weapon, or you can say a flying aerial weapon missile. Okay, guided in the sense सेथरे कोनसे प्रकार guiding mechanism थिबो. For an example, you say either GLONASS थिबो, नहले इंडिया रो suppose IRNSS थिबो, नहले कोन थिबो ना GPS थिबो, कोनसे गोटे guided system थ्रू रे से navigate होथिबो. And stealth रो माने केमिति बुझैतली पिला माने मन पकन. Stealth means what? कोनसी गोटे एरियल vehicle जदी हम आड़ को आसुची, जदी हम आड़े कोनसी एरियल vehicle आसुची ताला हम पाखरे गोटे रडार सिस्टम अछि. करेक्ट. सो रडार कंटीन्यूअसली रेडियो वेव्स चारि आड़ को एमिट करे, राइट? इमेजिन करंतु कोनसी गोटे एरियल vehicle ता आड़ को आसुची ताले से जानिबो केमिति ना से रेडियो वेव्स उरा सेठी ता देहरे बाजी की कोन करबो ना रिफ्लेक्ट करिवो. एठी बाजिला परे माने रेडियो वेव्स उरा एमिति जाउतले ता देहरे बाजी की कोन करबो रिफ्लेक्ट करिवो. सो एठी स्टेशन रे जे बसी जिसे ठीक जानि परिबो जे गोटे बॉडी गोटे हेवनली बॉडी मो आडकू ए स्पीड रे एति की साइज रे से बॉडी मो आडकू ए स्पीड रे आसुची आ ए डायरेक्शन रो आसुची. करेक्ट. सो ए रडार रे जदी धरा पडिबो ताले जानि परिबो. इमेजिन करंतु ए रडार रे ये धरा पडिबोनी से कोन करिवो ना ता बॉडी रे एमिति किछि कोटिंग थिबो, आइदर से कोन करिवो ना रेडियो वेव्स उडाकू अन्य डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर दबो, बाजिला परे से अन्य कोनसी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देला, नले निजे ही ताको एब्जॉर्ब करनेला सपोज. ताहले ए लोको एठी बसी के केबे जानि परिबोनी जे ताड़ को किसी ऑब्जेक्ट आसुची, राइट? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द स्टील्थ टेक्नोलॉजी. दिस इज व्हाट इज द स्टील्थ टेक्नोलॉजी. आज का डेट रे अधिकांश एरियल व्हीकल्स धरिका ड्रोन्स धरिका ए स्टील्थ टेक्नोलॉजी ही यूज करछंती सो दैट दे डिसीव द एनिमी रडार. नले आपण सुनुथियो बहुत तरह ड्रोन अटैक हेगला, ड्रोन अटैक हेगला, ड्रोन अटैक हेगला. एटा केमिति होउची? सेतरे स्टील्थ मेकानिज्म अछि बोली ही ड्रोन अटैक हे जाउची. नले ड्रोन ता आसुची तो रडार रे तो धरा पड़ी जिबा कथा. Correct. So it is a question कौन पचारुची focus करूँ. What is the name of the India's first of the 4 stealth guided missile destroyers? Right? या ना कौन? It is under Project 15B. Right? It is INS Visakhapatnam. Okay. ताले stealth technology रो भी गोटे इना जवाब आसी गलानी कौन? ना stealth guided missile destroyer. तामने सेपट साइड रो जदी गोटे stealth guided missile आसुची ताकू हमें destroy करि परिबा की? Yes, destroy करि परिबा. So that this is also possible nowadays. Alright. किंतु stealth technology सब बेले सेम कौन ना आपनकर रेडियो वेव्स उडाकू आइदर से absorb कर नोथिबो नले ताकू डिफ्लेक्ट कर दोथो आउ कोनसी आडो. That means deceiving the enemy radar. That is stealth. Alright. Next, you see this, it looks like this.
The Barents Sea, which was in news recently, is located along which of the following two countries? Barents Sea. पिला माने एबे कोनोसी सी कोनोसी लैंडमास न्यूज रे थिबो ता माने एटा मनर रखिबे जे एटा यूक्रेन नहले रशिया सहित एसोसिएटेड थिबो. ओके, मोस्ट लाइकली. सो इटी बेरेंट्स सी से कोचे न्यूज रे अछि. करेक्ट. सो बेरेंट्स सी अछि कोठी भलसे टिके लोकेट करंतु. राइट. जदि अटलास अछि ताले पाखरे जदि अछि कि मैप अछि पाखरे ताले भलसे देखंतु. Or otherwise you focus on this screen. This is the map. All right. This is the map of Europe. Okay. It देखो Norway लेखाई Sweden लेखाई Finland लेखाई और एठी Russia अछि. Correct. एमान को northern side को जदि जिबा. All right. गोटे ocean अछि ताना होछि Arctic Ocean. ताले Arctic Ocean रो southern side रे गोटे sea अछि जोटा यूरोप रो northern side को लागि कि अछि एटा को Barents Sea कहउछन. तामाने सिंपली आपण नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड रो ऊपरे नोटिस करंतु यू विल फाइंड दिस बेरेंट्स सी. करेक्ट. सो बेरेंट्स सी अगेन मु आपण को बारंबार कहिछि जोठी भी सी थिबो सेठी दीटा जिंसो प्रोमिनेंटली थिबार चांसेस अछि. गोटे हला क्रूड ऑयल. करेक्ट. गोटे हला आउ गोटे हला कोन ना नेचुरल गैस. करेक्ट. ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो दीटा जक थिबार चांसेस बहुत अधिका सेठी थाय. राइट. Barents Sea, it was in news recently. For what sake? Barents Sea is a marginal sea in this location. It is called the Murman Sea in Russia. तामाने Russia रे same sea रो माने तारा अलगा ना कोन Murman Sea. It is Murman Sea in Russia. All right. अच्छा आउ कोन Russian nuclear submarines sailed off for drills in the Barents Sea. Recently एटा पाई न्यूज रे थिला ये. Missile launchers were seen among snow forests in Siberia and so, right? For this reason, tamane nuclear capable submarines mane a region re ebe navigate koruthile. So seiti pai eta news re thila. Correct. Next. Now, which institution organized the National Innovation Conclave on Low Carbon Technology? Eta kiye thila na Bureau of Energy Efficiency. पिला माने क्वेश्चन क्लास रे कहितली आउ थरे कहूची कोन ना जो जो इक्विपमेंट ऊपरे बीईई रो लेवल थिबो तारो गोटा लिस्ट तयारी करिवे. दिस इज ए होमवर्क. होमवर्क कोन ना आपण टिके नोटिस करिवे को इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऊपरे. सपोज यू हैव ए टेलीविजन सपोज देखिबा को एमितिया ताले तारो राइट साइड रे एठी गोटे देखियो स्टिकर लागि थि. छोटिया स्टिकर एमति लागि थिबो. एतरे पांचटा स्टार थिबो 1 2 3 4 5. राइट. पांचटा स्टार रो एटा होची कोन एनर्जी एफिशिएंसी मीटर. आपण को काम कोन ना एमिति कोनोसी कोन कोन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अछि जहा ऊपरे बीईई रो गोटे लोगो थिबो नले एनर्जी एफिशिएंट स्टार थिबो. आई होप यू कैन मेक ए लिस्ट ऑफ देम. आज मो कथा आपण को नुवा लागुची किंतु एग्जाम हॉल रे ठीक समय रे जानि परिबे मो कोन टाइम कहउथिली. करेक्ट. So BEE commemorated the 20th Foundation Day by organizing National Innovation Conclave. The Facility of Low Carbon Technology Deployment, that is FLCTD, again a question, is a project financed by Global Environment Facility. It is our question. Implemented by the United Nations Industrial Development Organization, that is UNIDO. Again, this is a question. All right, tamane etu ketra question paile? Ek to BEE one question. Next asila FLCTD, tapre GEF, au UNIDO. But sabu a side ro question. Simple भाषा रे जोटा नुवा लागु जे सेटा ही क्वेश्चन आपण कोइ मन रखि. Ukraine shares border with how many European Union member states? Again, this is a very simple question but a very special one. Ukraine केतेटा यूरोप European Union member countries को सहित border share करछि. देखंतु रशिया तो यूरोपियन यूनियन रे नाही. करेक्ट. यूक्रेन भी नाही. ताले केतेटा कंट्री अछथि एपट साइड रे बेलारूस, पोलैंड, स्लोवेनिया, then Slovakia, basically Slovakia, Hungary and Romania. ए सब countries माने एठी आ गोटे country अछि. This is basically I think Moldova. I think it is Moldova. Correct. So ए सब countries माने border formation करजने का सहित ना यूक्रेन सहित. यूक्रेन share border with 4 European Union member. एमान को भितरु European Union रो member के सब हंगेरी गोटे, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया. ए चारिटा ही European Union रो members. Okay. आ overall यूक्रेन सहित 7टा देशर बॉर्डर्स लागि छै. द यूरोपियन पार्लियामेंट अच्छा यूक्रेन आल्सो शेयर्स बॉर्डर विथ बेलारूस टू द नॉर्थ एंड द मोल्डोवा टू द साउथ. दैट्स करेक्ट. किंतु एमाने यूरोपियन यूनियन रो मेंबर नहंती.
Okay, total 7 member countries ଅଛନ୍ତି European Ukraine ର neighboring. European Parliament, after a debate in which President of Ukraine addressed and received applause, recommended that Ukraine be made an official candidate for EU membership. तामाने recently European Parliament decide करछि जे Ukraine को भी European Union रो membership मिलिबा को जाउछि. Now, which international institution approved a mandate to draft Global Plastics Treaty? Eta kiye kala? Global Plastics Treaty was in news recently. Eta kiye kala? United Nations Environment Assembly, UNEA, with 175 member countries. So you just know it. Yaro member countries hele etikita signed a mandate which makes it highly legal binding for the signatories to end plastic pollution. Tamane, according to UN Environment Assembly, 175 member countries, these all 175 member countries, आगो को जाके तमान को पर बाध्य होबो जे से माने प्लास्टिक पोल्यूशन कम करंतु. आइदर प्लास्टिक रो यूज ही बंद कर दियंतु. पुनी यूज केमितिया गोटे हला कोन गोटे टर्म हो जे सिंगल यूज प्लास्टिक. ऑलराइट, आमे नॉर्मल प्लास्टिक रो यूज कमी परिबानी. इट इज वेरी नेचुरल. जेमते कि सपोज मु लिखु जे पेन रे, राइट, तो पेन टा एक्चुअली प्लास्टिक रे तयारी हिची. I cannot change it. लुहारे तयारी कर दी परिबनी. ओके, सो जो प्लास्टिक गुडा सिंगल यूज प्लास्टिक ताकू हां हमें चेंज कर परिबा. जेमिति आपण पैकेजिंग मटेरियल्स घरिका नो जो मानो पॉलिथिन्स घरिका जोतरे परिबा आणुचंती सेगुडा को सिंगल यूज प्लास्टिक कहउचंती. करेक्ट. मल्टीपल यूज प्लास्टिक जेमिति प्लास्टिक बाल्टी गोटे हला, they are not single use plastic. Correct. And plastic chairs गुडा, right, single use plastic रो माने यूज को से माने अधिक स्ट्रेस दोचंती. All right, so the Global Plastics Treaty will be drafted and ratified in next 2 years. तामाने according to this question, United Nations Environment Assembly, right, United Nations Environment Assembly 175 टा member countries मान को ऊपर एजेंसी बाइंडिंग करछि जिसे माने प्लास्टिक रो यूज उरा बंद करिवे. How Indians view gender roles in families and society. It is a report released by which institution? देखो तो again लंबा चौड़ा स्टेटमेंट अछि किंतु ताको मन तो रखिया पड़िबो. How Indians view gender roles in family and society. तबने gender roles in the sense basically male और female रो work participation. तबने केते अधिका women माने काम क्षेत्र को जाई परछंती. हां, सो ए रिपोर्ट ता के रिलीज करछि? Pew Research Center. As per the report, 55% of the Indians believe that men and women make equally good political leaders. Correct. So this was the report. खाली अपन जानतु किए रिलीज करछि, Pew Research Center रिलीज कला. That is what you need to know. That's it. When was the अच्छा आउ गुटे जिंस I must not forget this thing कि पिला माने there is a goal called sustainable development goal. Correct. ମୁଁ बारंबार आपन को ए जिंस लिंक करया पे कहूजी कोन ना whenever you are thinking about some social concepts, suppose for an example this concept talks about gender equality. Correct. Gender equality hela कि suppose housing for all hela नहले कोन ना clean drinking water or tapped water for all, right. Fourth रे आसिला कोन ना sanitation गोटे टर्म आसिला. ए टर्म्स गुडा को ना पिला माने दया करी कि सस्टेनेबल गोल रो जो 17 टा गोल अछि ता से तो लिंक करिया को चेष्टा करबे. फॉर एग्जांपल इफ आई से जेंडर इक्वालिटी, दिस इश्यू टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी. ताले जेंडर इक्वालिटी पिला माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो केते नंबर गोल रे लिखाई छी एटा उठी को नोटिस करथिबे. करेक्ट. दिस लिंकेज इज वेरी इंपोर्टेंट. ओके, आउ थरे कहूची खाली क्वेश्चन को देखि कि सुआ भलिया घोसीले किछि लाभ मिलिबनी unless and until you dig into it. Okay, माने ता पछरे जो क्वेश्चन अछि ताकू बुझिया के चेष्टा कर. ऑलराइट, as my students I must expect कि आपण माने एटा करिवे. Next. Now, when was the Convention on Cluster Munitions signed? Convention on Cluster Munitions एटा 2008 रे साइन हेछि. In May, 107 states concluded an international treaty prohibiting the cluster weapons named Convention on Cluster Munitions. It is munitions in the sense ammunition. Okay. Recently, Russia has accused for using cluster bombs and vacuum bombs in the ongoing war against Ukraine. As per the convention, the cluster munitions release explosive submunitions, each weighing less than 20 kilograms and
includes those explosive submunitions. They are non-precision weapons designed to injure or kill human beings over a larger area. ता माने कोन simple भाषा रे suppose आमे गोटे missile एटू छाडुचंती. This is a missile, correct? Missile is targeted to a particular locality. ताने ए missile एमिति आकाश रे गला जाई कि खसिला कोठी ना इमेजिन करंतु यूक्रेन रे खसिला. यूक्रेन रो गोटे कैपिटल सिटी हला काइव. ताने काइव रे जोठी से एक्सप्लोड करिवो से जागार लोकालिटी रे बहुत लोकन को अफेक्ट करिवो. दैट मींस इट इज टारगेटेड टू द पीपल ऑफ यूक्रेन ओनली. किंतु गोटे प्रकार बम अछि ताको हमें क्लस्टर म्यूनिशंस कहउछन. ताने ए बम ता एक्चुअली कोनोसी गोटे एरिया को टारगेट करा जाउनी. इट इज टारगेटेड टू द पॉपुलेशन इटसेल्फ. करेक्ट. दे actually they do not target the area itself. ना से कोन करे टोटल पॉपुलेशन को. ताने सपोज मु गोटे बायोलॉजिकल वेपन छाडी. बायोलॉजिकल वेपन अरे जेमते कि एंथ्रैक्स हला. एंथ्रैक्स को मारी माने सेही लोकालिटी सहित आखो पाखर सब लोकालिटी अफेक्टेड है because it's a deadly virus. Correct. So these kind of weapons are called cluster munitions. All right, question कौन पचारुची, right? Recently a cluster munitions ता केबे, you see what is the question? When was convention on cluster munition signed? It was signed in 2008. हां ए जो war चली छी यूक्रेन सहित सेठी रशिया ऊपर गोटे एलिगेशन लगा गला जे से माने कोन करूचंती ना दी प्रकार बम यूज करचंती. गोटे हला वैक्यूम बम आ गोटे हला कोन क्लस्टर बम. That is targeting a large amount of large section of the society. Okay, so for this it was in news. Next, you see, as per the data by the government, what is the number of children affected due to COVID-19 in India? Normally देखा गला initial years रे कि initial time रे कोरोना खाली बड़ लोकन को ही अफेक्ट करछि. किंतु परे एटा डिस्कवर हला जे कोरोना कोन करछि छोटो पिला को भी अफेक्ट करछि. तले ए गवर्नमेंट डेटा हिसाब रे केतेटा छोटो पिला एबे पर्यंत अफेक्ट हेलानी 1.54 लाख गवर्नमेंट रो डेटा कहछि. The Roorkee Water Conclave has been organized by IIT Roorkee along with which institution? Along with National Institute of Hydrology. Correct. So जदि हम देखिबा यार background, the Minister of Jal Shakti Gajendra Singh Shekhawat inaugurated the second edition of Roorkee Water Conclave today in Roorkee. Right? So Roorkee is in which state पिला माने ठीक है चेक कले. Roorkee को state रे आसुची. It is in which state? Roorkee. It's being jointly organized by IIT Roorkee and National Institute of Hydrology. And the theme, what is the theme पिला माने? Theme होची water security for sustainable development. This was the theme. All right, the National Institute of Hydrology is an autonomous society under the Ministry of Jal Shakti. Correct. So dita question. Hotela Roorkee कोठी अछि और National Institute of Hydrology भी कोठी अछि. यार हेडक्वार्टर कोठी. दीटा क्वेश्चन. All right, अच्छा आ गोटे क्वेश्चन. ए जो रूरकी जहा को हम कहउचंदी आज का डेट रे आईआईटी रूरकी तारो ओल्ड नेम कोन थिला? प्रथम कथा ता पुराना ना कोन आ को ईयर रे तयारी हेतला. करेक्ट. सो दीज आर ऑल 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस साइड. ठीक है, सर्च करो. ओके, खाली सुनिले हबनी, यू हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट. नेक्स्ट, थेयम और कलियत्तम इज अ रिचुअल डांस परफॉर्म्ड इन व्हिच स्टेट और यूटी. देखो ए टाइप रो किछटा नाम कहि दोची काले रिलेट करि परिबे. गोटे होची कोन ना मोहिनीअट्टम. ऑलराइट. गोटे हला कोडियट्टम. आ गोटे हला एठी देखंतु कोन लिखा छी कलियट्टम. I hope you can link them. All of them belong to the same state, that is Kerala. Correct. Yes, I asked. देखो ए जो टर्मिनोलॉजीज गुडा को नहीं कि आपण आराम से गेस कर परबे एटा को स्टेट रो हितबो. इवन दो यू डोंट नो द आंसर ताले प्रोबेबली 50% रो चांस हिसाब रे नहीं कि भी आपण एटलीस्ट केरला पर्यंत पहुंच परिबे. करेक्ट, इफ यू नो द बैकग्राउंड ऑफ इट. करेक्ट. सो व्हाट इज द थयम? इट्स a 800-year-old ritual dance performed in the state of Kerala. It exhibits the folk dances and art, thereby displaying the ancient tribal cultures. Various types of thayams are performed. Ritual dance Agni Kandakaran Thayam has begun at Kaliyattam festival in Kunnur, Kerala. Okay, so this festival भी recently Kunnur celebrate hala. Again, हाँ मु पचारली कोन ना IIT Roorkee कोठी अछि. It is in Uttarakhand, that is true. किंतु तार पुराना नाम, old name.
Now, what is the objective of Jan Aushadhi Bal Mitra program? Right, to educate children on Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana. Right, so Bal Mitra program eta kaha pai na choto chua ko aware kare. And here you should know one more thing. Right, kono ना जत्ते बेले हम कहउछथि ए जन औषधि परियोजना या ना यार बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन ना जो मेडिसिन्स गुडा अछि ना मेडिसिन्स आर एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज तो गवर्नमेंट कोन कला मेडिसिन्स गुडा को कॉस्ट फ्रेंडली कि माने अफोर्डेबल करिया पय कोन कला ना मेडिसिन रो गोटे वेरिएंट लॉन्च कला जहा को हम कोन कहउछथि जेनेरिक मेडिसिन्स रे कोन होय ना कंपोजिशन सेम थाए composition is the same but the price is actually cheaper. लोक भाबते प्राइस कम अछि त यार इफेक्ट कम थिबो. It is not so, remember. Okay, it's only about the mindset. The generic medicines are that much effective as that of a costly or branded medicine. Alright, हां गोटे ब्रांड रो टैग बाजी न थाए सेति में ताको हमें एते प्रायोरिटी दियंती. Okay, but same effective, correct? Now, which union ministry has constituted Swadesh Darshan Awards Ministry of Tourism? A प्रकार क्वेश्चन पढिले न भूल हुएनी. हां, सो एगुडा फ्री बीज गुडा तमाने एगुडा सब आपन को माने टिके कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करिया पे क्वेश्चन दिया जाय, राइट? माने ग्रेस टाइप रो क्वेश्चन कोइ परिबे आपन पढुची एमते क्वेश्चन माने मिनिमम 5% क्वेश्चन तो एमितिया ही थिबो जोडा आपन देखु देउ कर देबे. आपन लागियो जे सब क्वेश्चन एमतिया पढि जानता कि, करेक्ट? नेक्स्ट अच्छा आउ माने गोटे पचारतला पिला माने कोन ना नीति आयोग रो फुल फॉर्म पचारछ. विल यू बिलीव मी गोटे एग्जाम रे से पचारछि नीति आयोग रो फुल फॉर्म कोन पचार दिछि एटा किए जानि नि मते कहले हु डजंट नो इट, करेक्ट? सो एमिति क्वेश्चन पचार दउछि से हना सेति पे आपन टिके माने माइंड रे एटा भी रखिथिबे जे नै नै एमिति क्वेश्चन आसी भी जाउछि. आपन को सर एमिति क्वेश्चन काहे कि आसीबो नै नै आसुछि. नेक्स्ट you see Zapori Zaya nuclear power plant that was in news recently is located in which country? ए समय रे जदी किछि भी थिबो ताल तो प्रोबेबल आंसर ता होछि यूक्रेन ही हो. ओके, Zaporizhia रशिया थिबो नले यूक्रेन थिबो हो कोन. Okay, so this is a nuclear power plant is a major electricity supplier in Ukraine. त माने ए पावर प्लांट रू यूक्रेन रे electricity supply होची. The plant generates 40 to 42 billion kilowatt hours, which accounts for 1/5 of the average annual electricity production of Ukraine. तमाने यूक्रेन रो 1/5 electricity यही प्रोड्यूस करची. It was recently used in news. Ukraine has claimed that Russian military has seized the plant and started shelling. Right, shelling in the sense bombing. Okay, it also has the largest nuclear power plant in Europe. Correct. So it is also the largest nuclear power plant in Europe. तमाने this is another question. I hope you can see it. दुनिया रो माने in the sense यूरोप रो सबटु बडो nuclear power plant कोटा ना Zaporizhia nuclear power plant जोटा recently Ukraine कहला जे माने सब नै जाय छथि annex करने छ. Next, as per the recent report, what is the contribution of YouTube creator system to Indian GDP? It is 6,800 crore. Okay, recently हमें जाजपुर आउ चितालो ब्रांच रे डिस्कस करथले कोन ना सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, करेक्ट? सेथिरे टिके मने पकांतु. इफ आई टॉक अबाउट दिस यूट्यूब क्रिएटर, ये जीडीपी को कंट्रीब्यूट करूची पैसा हिसाब रे, ताले एटा पिला माने निजे भाबी कि मते कोंतु एटा प्राइमरी सेक्टर रे आसीबो कि सेकेंडरी रे आसीबो कि टर्शियरी रे आसीबो कि क्वाटरनरी सेक्टर रे आसीबो, राइट? यू जस्ट इमेजिन एंड टेल मी. ऑलराइट, को सेक्टर रे पळे आसीबो यूट्यूब क्रिएटर त माने आमे जो यूट्यूब रे चैनल्स घरिका क्रिएट करथन, राइट? तो ये केते की टंका कंट्रीब्यूट कर सलन ना 6,800 करोड़ रुपीस. गोटे चासी रे जीवन जाको चाष कले भी एते की टंका पे परिबनी माने एटा मु रिलेशन सहित पूरा लॉजिकल एनालिसिस करी के बुझैतिली जे हाउ यू नो द अमाउंट ऑफ अर्निंग्स वैरी फ्रॉम सेक्टर्स टू सेक्टर. ओके, सो एज पर द न्यू रिपोर्ट देखो तो सेटा हमें बही रे पढिले बेसिक्स, एटा होचे तार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. सो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट, रिमेंबर फ्रेंड्स. As per the new report by independent consulting firm Oxford Economics, YouTube's creator ecosystem contributed to around 6,800 crore rupees in Indian GDP. Correct. It is also said that the number of channels on YouTube in India is over 1 lakh subscribers to 40,000 at 40,000. Right.
The creator's presence on the platform can help to explore multiple revenue streams. This is a potential area for income. Okay. Now, which country has been recently added in the grey list of FATF? Okay, one of my students, Arifin recently, and Priyanka madam is also saying that 7th March to 4th is the 4th Janaushadhi Divas. That is correct. Okay. Saurabh Kumar is saying that it comes under the primary sector. Saurabh, outre mone pakandu. YouTube creation is a service basically. It's not a product. Saurabh, mone pakandu outre. Okay, it comes under which sector? YouTube creating YouTube channels, providing YouTube content. It was a services asuchi. Tamane eta koi sector ra asibo? Bhabantu, Saurabh. Primary to definitely asiboni. Which country has recently been added to the grey list of FATF? Right, FATF, it stands for FATF. FATF ro grey list re kaha ko add kara gala na UAE ku. Correct. FATF stands for Financial Action Task Force. Yaro dita mandate. Gote hela kono na ek to black money. Right. Mane jota ko ame kon kohchandi na money laundering. Money FATF ro basic kamo kono? Money laundering ku rokiba and to restrict terrorist financing. Terrorist financing. ए दीटा काम ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेबा होची कार काम ना FATF. ताले FATF रो गोटे ब्लैक लिस्ट अछि, गोटे ग्रे लिस्ट अछि. Correct. Next one. Now, what is the name of India's indigenous automatic train protection system? Right, जो handout मु देई छी एथर को से handout रे एटा को पूरा explain करी छी. Right, मार्च रो जो फर्स्ट वीक रो हैंडआउट देई छी सेतरे ई सब जिंस ओडा मेंशन कराई छी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जहा को मैं कवच कहउजंदी. राइट, प्लीज लुक एट दिस इमेज. कवच कहा अंडर रे काम करूची ना RFID टेक्नोलॉजी अंडर रे काम करूची. RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी. रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तमाने दीटा ट्रेन मझरे जतले कोलिजन होची ना गोटे ही ट्रैक रे पळे आछंती. कोलिजन हो जाउची, एज ए रिजल्ट एक्सीडेंट हेके लोक मरचंती नले माने लॉस होची लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो ये कोन करूची ना ए जो ट्रेन कोलिजन सिस्टम, दैट मींस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कोन करिवो ना ए कोलिजन गुडा को रोकिया को चेष्टा करिवो. करेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द कवच स्कीम सिस्टम. टिके माइंड रखिबे. ओके. आ कोन इट इज इंडियाज ओन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम इन डेवलपमेंट सिंस 2012 अंडर द नेम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम. त माने यार पुराना ना कोन थिला? ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम थिला पुराना ना, किंतु गवर्नमेंट एबे ताको नुवा ना कोन दे देछि ना कवच देछि. करेक्ट. तो एमिति करिकि जिंसोडा को कल्चर करिवे. नेक्स्ट, कन्याकुमारी वाइल्ड सैंक्चुरी कोठी अछि? इट्स वेरी इजी. मु कहूनी एटा पढिबनी गली, ये भी पढला वाला क्वेश्चन, कारण कि बहुत गुडे पिला अछि जे माने जानि नाथि कन्याकुमारी टा को स्टेट रे अछि एटा भी जानि नाथि. राइट, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि एटा केरला रे अछि कि तमिलनाडु रे अछि. हां, जेमिति कि गोटे क्वेश्चन निजे को पचारिबा, पिला माने तिरुपति कोठी अछि? अधिकांश पिला कोनते एटा कोठी अछि ना तमिलनाडु रे अछि. करेक्ट. माने से माने भाबते कोन ना ताको माइंड रे कोन आईडिया अछि ना साउथ रे कोठी गोटा अछि. साउथ. ओके, पिला माने साउथ रे तो बहुत गुडे स्टेट अछि. साउथ इंडिया रे आपण देखनांती पांचटा स्टेट हलानी. बारंबार क्लासरूम में एटा बुझाय पिला माने साउथ इंडिया को एमिति साउथ करी छाड़ दबनी. राइट, त माने एठी आंध्रा हैला बेलकू एठी तमिलनाडु हैलानी, एठी गोटे केरला अछि, एठी कर्नाटका अछि, एठी तेलंगाना अछि. तो एमिति करी स्टेट गुडा पांचटा हैलानी. राइट, सो यू शुड नो पिन पॉइंटेडली कि एटा एक्चुअली कोठी अछि. राइट, इट इज इन कन्याकुमारी, इज इन केरला, इज इन देखो मोर भी आंसर भूल गेला. तमिलनाडु. Correct. Kanyakumari is in Tamil Nadu. Tirupati is in Andhra Pradesh. Okay. So you see, Glycosmis albicarpa, a new gene berry species. So eta pai eta news rethala. A new gene berry species were recently discovered from Kanyakumari. A team of scientists from Botanical Survey of India has discovered the species with a distinct large white fruit. The species is endemic to the southern western Ghats and belong to orange family. तमने orange family सहित ये जो ए species रा association अछि, gene berry species. Okay, तो एठु आउ गोटे homework नियंतो पिला माने. What is this BSI? When I say Botanical Survey of India, the Botanical Survey of India रो complete detail search करियो. Correct. Now, what does Article 176(1) of the Indian Constitution deal with?
ए सेम क्वेश्चन पिला माने बारंबार मते पचारନ୍ତି जेतବେଳେ पॉलिटिकल क्लास नि सेतବେଳେ पिला माने पचारନ୍ତି कॉन्स्टिट्यूशन रे को आर्टिकल्स गुडा मन रखिबा पिला माने को बहुत सिंपल आंसर उठ दिए कोन ना जो आर्टिकल एबे न्यूज रे अछि करेक्ट if one article is in news recently suppose the article is article 141 of the constitution or say article 279A of the constitution correct गोटे क्लास रे टैक्सेस पढौतली सेठी मन पकांतु 279A आ गोटे थला 246A एगुडा सब पढै छी करेक्ट सो ए आर्टिकल्स गुडा जदी न्यूज रे अछि तले एगुडा मन एंड एज सच पॉलिटी रे जतबे जहार जहार क्लासेस मु सारे देई छी एसएससी 1 2 3 4 घरिका सेमान को क्लास रो सरिला परे पॉलिटी रे मु एया भी कहि देई छी पिला माने एटा देखो एटा होची लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स त माने लिस्ट भी देई छी पिला माने करेक्ट त माने आर्टिकल 1 2 3 रु नै की आर्टिकल 365 395 भितरे जहा जहा इंपोर्टेंट आर्टिकल अछि सब गुडा को ही मु कहि देई छी सो ए बेसिक लिस्ट ता तो मन रखिबे किंतु ताटू इवन मोर इंपोर्टेंट होची कोटा ना जोटा एबे न्यूज रछि ओके सो what is this article 176 subclause 1 talks about it talks about governor's address in both houses of the state correct why it was in news Priyanka madam has shared some information FATF was established in 1989 the headquarters is in Paris and that is in France our objective होची to combat money laundering and terrorist financing this is correct thank you for this okay अच्छा ए इशू का काहे की न्यूज रे थिला 176 subclause 1 it the constitution enables the governor shall address both houses of the state okay जदी ए सेम जिंस हमें देखिबा प्रेसिडेंट टाइम देयर इज अ टर्म कॉल्ड प्रेसिडेंशियल एड्रेस ता माने जेबे भी गोटे नुवा लोकसभा तयारी हला कि लोकसभा रो गोटे नुवा वर्ष स्टार्ट हला इन द सेंस पार्लियामेंट रो नुवा वर्ष स्टार्ट हला त माने बजट सेशन बेसिकली नंबर 1 न्यूली फॉर्म लोकसभा नहले बजट सेशन रे प्रथम दिन रे कोन करिवे ना प्रेसिडेंट ताको हाउस को एड्रेस करिवे जॉइंट सेशन रे नहले जदी एटा स्टेट हुए ताले आर्टिकल 176 सब क्लॉज 1 अंडर रे गवर्नर शैल डू द सेम आइदर नुवा करी की गोटे लेजिस्लेटिव असेंबली तयारी हला न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली तयारी हला नहले वर्षर प्रथम बजट जेबे प्रेजेंट करा जाय सेही बजट सेशन रो प्रथम दिन रे गवर्नर कोन करिवे हाउस को माने एड्रेस करिवे ऑलराइट जदी लेजिस्लेटिव असेंबली थिबो खाली ताले गोटे ही हाउस रहइबो जदी काउंसिल भी अछि ताले जॉइंट सेशन रहइबो करेक्ट सो दैट टुगेदर commencement of the first session after each general election or that at the first session of each year that I said article is in news recently because the government of Telangana has announced its decision on conducting the budget session of legislature without the customary governor's address which is actually a breach of the constitutional provision alright tamane Telangana wala kon कहउचंती तांको गवर्नमेंट कहला जे हमें गवर्नर्स एड्रेस दरकार नै हमें डायरेक्टली कौन करिवो ना बजट सेशन स्टार्ट करिवो राइट यार किंतु इंपैक्ट अछि कोन कहले जदि पॉलिटिक्स सेति के डिटेल रे पढुचंती कि जानुचंती ताले जानतु जे जतबेले गवर्नर की प्रेसिडेंट हाउस को एड्रेस करूचंती ताले इमेजिन करंतु बजट सेशन स्टार्ट हला फेब्रुअरी 1 के 2022 ऑलराइट ताले एई दिन माने तार जस्ट पूर्व दिन ओके माने सपोज फॉर एन एग्जांपल जनवरी 30 okay so ए दिन 31st बेसिकली 31st रे प्रेसिडेंट कोन करिवे हाउस को एड्रेस करिवे ए एड्रेस रे से मेंशन कोन करंती जे एठू त माने 2021 अप्रैल रु नै की 2022 रो जनवरी पर्यंत गवर्नमेंट माने ताको गवर्नमेंट कोन कोन सब अचीवमेंट करि आसी तमने से ए जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हाउस रे से तांको गवर्नमेंट रो सब अचीवमेंट्स गुडा को गणा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑलराइट तमने माने से एड्रेस कोन करंती जे माय गवर्नमेंट हैज अचीव्ड दीस थिंग्स इन द लास्ट ईयर ऑलराइट तापर कोन हुए ना से ए जो भाषण दे के जानती से ता ऊपर सेही समय रो गवर्नमेंट कोन करे गोटे मोशन ऑफ थैंक्स आने मोशन ऑफ थैंक्स ऑलराइट यारो इंपोर्टेंस मु बतेबा को चेष्टा करूची पिला मन ऑलराइट तमने गवर्नमेंट ता पर कोन करियो मोशन ऑफ थैंक्स आनला मोशन ऑफ थैंक्स ऊपर एबे कोन होबो ना डिबेट हला पर कोन होबो ना वोटिंग होबो
एबे जदि गवर्नमेंट तिष्टिबार अछि ताहले आउट ऑफ 543 ताको निहाती 272 टा वोट सपोर्ट दरकार। एबे जदि वोटिंग होउची वोटिंग मोशन ऑफ थैंक्स ऊपर आ जदि वोट कला बेले गवर्नमेंट को एति की वोट मिलु नाही मेजॉरिटी वोट मिलु नाही ता माने नेक्स्ट स्टेज रे से कोठी जिबे ना अल्टीमेटली द गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू ए कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन अगेन कॉन्फिडेंस मोशन रे भी जदि 272 मिलु नाही आउट ऑफ 543 ताहले एबे गवर्नमेंट कोन हैला ना भांगिबो एटा हला दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ द गवर्नमेंट तमें द मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन ए समय गवर्नमेंट भांगिला प्रेसिडेंट आउ जणको गवर्नमेंट फॉर्म करिया पे इनवाइट करिवे राइट। अच्छा एबे जेतबे तेलंगाना गवर्नमेंट मना कला जे हमर गवर्नर्स एड्रेस दरकार नाही तमें इमेजिन कले ए टोटल प्रोसेस ता तो कोन हे गला डिलीट हे गला तमें गवर्नमेंट भांगिबार ए बाटोटा तो टोटली से निजे ही बंद कर देला करेक्ट। सो दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन यू रिमेंबर इट कि जेतेबेले प्रेसिडेंट्स एड्रेस रहउची कि गवर्नर्स एड्रेस रहउची ये गोटे माने साधारण गोटे माने प्रोसेस नुह इट हैज अ वाइडर इंपैक्ट ओके आई होप यू गॉट इट। Now, who has been appointed as the chairperson of Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal, that is TDSAT? पिला माने बहुत थोर एमती देखा जायछि एग्जाम रे ए सेम क्वेश्चन पड़ी छि व्हाट इज TDSAT तार फुल फॉर्म पचार देछि। ऑलराइट तो यार चेयरपर्सन एबे की हेचंती जस्टिस DN पटेल। जस्टिस DN पटेल इज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ दिस TDSAT। ऑलराइट सो जत्ते बेले हमें पढिबा ट्राइब्यूनल्स विषय पढिबा ना ट्राइब्यूनल पढिबा तापरे जुडिशियल सिस्टम पढिबा सेतले हम कहिबी जिंस उडा जे ए ट्राइब्यूनल्स उडा कोन आ ताको काहे की तैयारी करा जाय बेसिकली आ तार चेयरपर्सन जे थाती मोस्टली से जणे आइदर सर्विंग जस्टिस थांती नले रिटायर्ड जस्टिस थांती। ओके सो हियर TDSAT रो नुवा हेड हे गला कि जस्टिस DN पटेल राइट। सो फ्रेंड्स दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन में जहां जहां डिस्कस कले मो आउथरे आपन जो माने लेट रे जॉइन करछन ताको आउथरे गोटे द स्टेटमेंट मींस थॉट ऑफ द डे बतै दिए राइट। आज जहां माने आज जाय जहां ऊपर दुनिया हसी जी सेही माने ही इतिहास तैयारी करछन ओके। हां जो माने निजर चेष्टा करिसंती एठी बहुत गोटे इंपोर्टेंट जिंस होची चेष्टा करेक्ट। ए चेष्टाटा होची रहिबा दरकार और चेष्टाटा भी राइट वे रे हेबा दरकार ओके। So with these words, with these thoughts on a Sunday morning, I'm winding up this session. Thank you so much for your patience hearing. Okay, so let's wind up. Okay, thank you so much. We'll meet again in the next class with new source of energy. Correct. Thank you so much. Bye bye all. Enjoy the Sunday. Right. Thank you so much again.